अस्सलाम वालेकुम. I hope कि आप अच्छे से होंगे. And by blessing of Allah, I'm fine. So far till now, I was giving lectures on different topics, on different issues which had been prevailing at national or international level. But today, I'm going to discuss a very important chapter, very important topic, that is accounting assumptions. This is the basic concept which all the students, whether in the 11th standard or preparing for any examination where topics related accounting will be asked, because by far this is very important to understand how the financial statements works, how they are to be prepared. In order to understand them, as a student of commerce, it is imperative, it's vital, it's very important for them to understand the accounting assumptions. देखिए बेटा, ये ऐसी चीजें होती हैं कि ये आइडेंटिफाई नहीं की होती है कि भाई हम ये assumption फॉलो करें, ये assumption फॉलो करें. They have to be adopted at any cost. इनको एक्सप्लेन नहीं करना होता है. जब आप अपने स्टेटमेंट्स बनाते हो, जब आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हो, तो आपको इन चीजों के बारे में मेंशन नहीं करना है. It is self-understood that they have to be adopted, they have to be implemented, and if they are not implemented, it means that accounting rules, there is violation of accounting rules. So, as you know, the controlling body which issues the accounting rules and other things, that's Institute of Chartered Accountants of India, who is responsible for this. They have already mentioned that as per the accounting standard first. Accounting standard is something different topic, but I will not get in that topic right now. वो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसमें कौन कौन स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, कौन कौन स्टैंडर्ड्स डिलीट हुए हैं. तो but as per the accounting standard first states that assumptions have to be followed, and as well as International Accounting Standard Board first also states that these assumptions have to be followed while preparing the financial statements. So you can understand on your own how much important these assumptions are, because if a student cannot understand them properly, if he don't have such and so proper information about these standard assumptions, I don't think he can understand the balance sheet or some other information which are related to these financial statements properly. Because 11th का base बड़ा important रहता है. So as well as all the students need to go stepwise, because stepwise जाने के लिए एक सीढ़ी चढ़ना होता है. तो पहले अकाउंटिंग को समझने के लिए assumptions जो, there are three basic accounting assumptions. The first one is going concern assumption. Second one is consistency assumption. And third one is
accrual. Accounting assumption. You can add accounting here. So going concern, accounting assumption, consistency, accounting assumption, accrual, accounting assumption. So for the first is concern, that is going concern assumption. What it states? It states that business have indefinite life. Indefinite life का मतलब क्या हुआ बच्चा? It means that business will keep on functioning. And when it is started, the person who starts the business does not have this kind of motive, opinion, thought in his mind that he will close down this business after a year, 6 months or 2 years. देखिए, आप किसी भी बिजनेसमैन से बात करें, अपनी लेवल पे बात करें बेटा, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसने जो भी व्हाट आर रिक्वायरमेंट सारी चीजें असम्बल की, पैसा इन्वेस्ट किया, क्या उसके दिमाग में उस टाइम ये होता है कि ये बिजनेस में 1 महीने के बाद, 6 महीनों के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद बंद करूंगा? नहीं, ऐसा किसी बिजनेसमैन के थॉट जहन में नहीं होता है. सो बिजनेस कंसर्न आर हैविंग indefinite life, continuity. They want to continue their operations. लेकिन कल को फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. We are uncertain about the future. Maybe some circumstances may arise tomorrow. कल को ऐसे हालात कुछ आ सकते हैं कि हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़े, हमारा लॉस हो सकता है, या हमारी कुछ और रिक्वायरमेंट की वजह से हम फुलफिल ना कर पाए, हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़े. वो तो कल की बात है. लेकिन जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ थॉट, वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ ओपिनियन in our mind that we're going to close down the business. So while preparing the accounts, we have to keep this thing in mind that our business have indefinite life. Indefinite life का मतलब हो गया that business will continue its operations for in the future for years together. There is no specific time that ये business बंद होना है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद. The period of the closure is not mentioned. It is very much indefinite. There is no specific time bound that up to this period we will continue our business. After that we are going to close it down. So here going concern assumption states बिजनेस का indefinite life है, बिजनेस की ऑपरेशंस कंटिन्यू होने वाली है. नाउ ये तो सब बच्चों ने पता होता है भाई. मतलब कोई बच्चे ऐसे क्रीमिंग करके याद करके एग्जाम में लिख लेते हैं भाई, बिजनेस इज हैविंग indefinite life like that. But the most important thing about this concept is that what are its implications? This is very important. ये तो सब बच्चे याद करके एग्जाम में चले जाते हैं. ये तो सब बच्चे ये ना इधर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके याद करके चले जाते हैं. लेकिन एग्जामिनेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा implications के बारे में एमसीक्यू पूछा जाता है. माइंडेड ऐसे नहीं आएगा व्हाट डू मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, व्हाट इट स्टेट्स. बट फॉर दोज स्टूडेंट्स फॉर 11th स्टैंडर्ड, फॉर देम इट इज टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दे हैव टू अंडरस्टैंड द implications एज वेल. बिकॉज वंस अगर उनका implication 11th में ही क्लियर हो जाता है, भाई आगे जाके वो बहुत अच्छा इस सब्जेक्ट में करेंगे. माइंडेड एंड रिमेंबर दिस वंस फॉर ऑल. Freeze this thing in mind that implications, to understand implications is as important as understand the concept of the going concern concept. So पहला इसका implication क्या है? The first implication is that assets and liabilities. It is due to this concept that assets and liabilities are classified into current assets as well as non-current assets. Or liabilities are classified into current liabilities or non-current liabilities. अगर ये कॉन्सेप्ट
नहीं इम्प्लीमेंट करना होता, अगर बिजनेस को इंडेफिनिट के लिए बिजनेस के पास इंडेफिनिट पीरियड काम करने को दिमाग में नहीं होता, तो भाई हम अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लासिफाई नहीं करते. We would not classify the assets into different categories like fixed assets, like current asset, like contingent liabilities. Sorry. So, the first implication is that assets are classified into current and non-current asset. ठीक है. अब ये करंट एंड नॉन करंट एसेट क्या है, ये तो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, बट थोड़ा मैं बताऊंगा आपको. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो कैश आपके पास है, कैश एट बैंक आपके पास है, और which can be converted into cash within a short period, normally in a one accounting period. एक साल के अंदर जिस चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, या आपके पास अगर ऑलरेडी कोई कैश अवेलेबल है, तो भाई उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज करंट एसेट. अब इसकी बहुत कैटेगरीज है, ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पे मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं. नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट परचेज्ड फॉर द रीसेल पर्पस, बट दे आर परचेज्ड फॉर द पर्पस टू ब्लॉक देम इन द business organization in order to use them to generate the revenue, and which cannot be converted normally, which are not converted into cash in a short period of time. So इसका पहला implication क्या है, assets are classified into different categories. अगर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करना होता, तो भाई हम अपने एसेट्स को क्लासिफाई नहीं करते. अब क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, देखिए, करंट एसेट्स और करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट, इनको हम डिफरेंट तरीके से वैल्यू करते हैं. करंट एसेट्स को हम वैल्यू करते हैं अपने बैलेंस शीट में. करंट एसेट्स को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में. नॉन करंट एसेट्स को भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं. अब इनको करंट एसेट्स को हम वैल्यू कैसे करते हैं, हाउ दे आर बीन वैल्यूड, उनका मार्केट प्राइस देखा जाता है या उनका एक्चुअल कॉस्ट देखा जाता है. विच एवर इज लेस, वो उनका वैल्यू दिखाया जाता है. नॉन करंट एसेट्स को कैसे वैल्यू करते हैं, नॉन करंट एसेट्स का जो पैसा हमने खर्चा किया होता है इनको खरीदने के लिए, माइनस डेप्रिसिएशन, और जो पैसा उधर बचता है, इनका वैल्यू जो बचता है, उनको इनका नॉन करंट एसेट को उस हिसाब से बैलेंस शीट में दिखाया जाता है. सो हिस्टोरिक बुक वैल्यू, देयर नॉन करंट एसेट्स आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू. सो अनदर थिंग इज दैट सेम इज द केस विद द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज को भी हम क्लासिफाई करते हैं करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are to be paid in a one accounting period, or which becomes due for the payment in a one accounting period. Such liabilities are called current liabilities. And non-current liabilities are those which normally are to be paid after a one accounting period, or which becomes due for the payment after a one accounting period. Such liabilities are called non-current liabilities. It is due to this concept that liabilities are classified into current as well as non-current. So another implication of this is that liability amount any liability amount which business organization owes to other parties, such amount is shown in the balance sheet. So we have not to find out
market value of the liability or something else. We cannot show that जो पैसा हम किसी को ओवर करते हैं, जो उसका अमाउंट है, जो वो असल का पैसा, भाई इसको इस वाले पैसे को उसी अपने अमाउंट पे दिखाया जाता है. What is its another implication? Another implication is that prepaid expenses as you all know are those expenses which have been paid in advance and the benefit is yet to be realized. Such expenses are called prepaid expenses. So अगर हमने किसी को, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली प्रीपेड फोन होते हैं, पैसा पहले इस पे पे करना होता है, सर्विस बाद में हम यूटिलाइज करते हैं. सेम इज द केस विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मानो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, 1 साल का पेमेंट रेंट का एडवांस किया हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो बट दे हैव स्टिल नॉट यूटिलाइज द सर्विस ऑफ द बिल्डिंग. They have made the payment of the amount. They have made the payment of the expense. इसका मतलब है जो पैसा, जो बेनिफिट अभी अनयूटिलाइज्ड है, अनएक्सपायर्ड है, उस वाले पैसे को प्रीपेड कहते हैं. And prepaid expense, why it's shown as an asset? It is because of this going concern concept. So these are few implications of going concern assumption. So as a student, you must be aware about these. I will just try to recap it again because it's very important for examination point of view, for any kind of, if you are a student of accounting, you are a student of accounts, you are just interested in account, subject of accounts, you must know these things. The first and foremost thing is that classification between assets and liabilities are made due to this going concern concept. Prepaid expenses are shown as an asset. It's because of this, because of the indefinite period, indefinite life of an organization, and amount of the liability shown at the value which we owe to the outsiders. It is because of this going concern assumption. This was the first assumption I had discussed. For next two, I'll upload another lecture on this, because if I'll describe all in one lecture, पहला तो ये है कि इंटरनेट इशू है और बहुत लंबा टॉपिक बनेगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा. इस कॉन्टेक्स्ट में for this and for this consistency and accrual, I'll provide separate lectures. So in this context, be connected with this and kindly subscribe, share and comment. Thank you very much.